क्या हाल है गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रीकिंग वीडियो। मैं अभी लिटरली पिछली वाली वीडियो ख़त्म करके चुका हूँ, वीडियो शूट करके, और अभी बस एडिटिंग रहेगी। अभी एडिटिंग अगेन हो चुकी है, बस कलर ग्रेडिंग वगैरह ऐड करनी है अलॉन्ग विद सम म्यूजिक। शिट मैन, मेरा फेस इतना ऑरेंजिश क्यों लग रहा है भाई? मैं अंदर ही जाता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने पहली मील ले लिया, दैट इज़ 5 एग्स का हाफ फ्राइड ऑमलेट। और अभी मैं जिम जाने लगा हूँ। माई प्री वर्कआउट होपफुली इज़ रेडी। प्लीज़ क्या यस। तो बेसिकली गाइज क्या हुआ था, तो मैं कल जो वर्कआउट करने गया था, तो मेरे से पूरा ख़त्म नहीं हुआ था बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड, और उतने में ही मेरी बस हो चुकी थी। तो मैंने ये थोड़ा बचा लिया, और मैं अब इसमें थोड़ा सा और एडिशन करके एंड आई यूज़ दिस। अनटिल देन लेट्स गो टू द जिम फर्स्ट। उसके बाद हम वापस आके बनाना शेक वगैरह प्रॉपर मील लेंगे। उससे पहले हम एक दोस्त के घर जाएंगे एंड विल चिल आउट फॉर सम टाइम। उसके बाद हम देखते हैं, आगे खाना बनाएंगे, उसके बाद सोना भी है, और उसके बाद ऑफिस भी जाना है शाम को। ठीक है गाइस, तो प्री वर्कआउट पीने के बाद हमने थोड़ा सा वार्म अप किया विद सम डिप्स, मेकिंग श्योर की रेंज ऑफ मोशन पूरी है, एल्बोज थोड़ी सी बाहर है, ताकि आपका जो लोअर पैक है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो व्हेन यू आर गोइंग ऑल द वे डाउन, एंड व्हेन यू आर कमिंग ऑल द वे अप इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड द एंटायर थिंग। उसके बाद हमारा पहला वर्किंग सेट, और मे बी द वर्किंग सेट, येस ऑफ कोर्स, द वर्किंग सेट वाज ऑफ 17.5 kgs, एटलीस्ट 10 to 12 reps, एंड मेकिंग श्योर की रेंज ऑफ मोशन पूरी है। शोल्डर्स आपके एटलीस्ट ईयर के बिल्कुल साइड में होने चाहिए, ताकि आपका फुल वो रेंज ऑफ मोशन जो है, योर मसल इज एंटायरली स्ट्रेच्ड, स्पेसिफिकली दैट द फ्रंट deltoid of your shoulders and the upper chest, because that is the intersection where both these muscles are, joined. And then we move on to the next exercise, that is pec deck, or you can also call it chest flies. There are a few ways to perform this exercise, either putting your, making sure that the bench is set to an upper level that would target your lower chest, and then when you move the bench lower, it will target more of the inner chest and the center chest. And then the next exercise we moved on to is weighted dips. This is a really good exercise for your lower chest. That is the reason I focused more on this exercise. Even though I had to work out my triceps as well, however, my battery died. That is the reason I could not film that, and my phone was also getting, overheated, due to which these clips were a little jittery. And then we finished off with some handstand walking practice along with some push-ups. I just showed you guys what's it. Alright guys, as you guys can see, I've changed my look again, and thankfully my barber just picked up the call today, and I went ahead and got my beard groomed, and I didn't want to cut my hair, so that's the reason it just looks as it is. And the beard, I guess, let me know in the comment section below how it looks. Definitely looks pretty handsome. Alright guys, so I did go to a friend's place, and we sat there for about like an hour or so, or an hour and a half, and then I went to the barber's so that I could get this done. I've taken the shower, I have done my skincare routine for right now, and once I wake up I will get ready for work, and at that time I'll be doing a little bit of skincare as well. Niacinamide serum along with some moisturizer, and with that we will be done for at least 1 or 2 days, I guess. Alright guys, so I'll be heading to sleep right now, and I will see you when I wake up. गुड मॉर्निंग गाइज। तो बेसिकली हुआ ये कि रात को मैं लेट हो गया, एंड आई वोक अप लाइक एट अराउंड 7:19, और इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फिल्म कर पाऊँ। तो आई जस्ट वेंट अहेड एंड wore a black shirt with black formals along with some sneakers along with this black watch, और ऐसी लुक नहीं बना के गया था गाइस मैं। बस अभी रिसेंटली मैंने ये चोटी बनाई है। आई एम नॉट श्योर कि कैसी दिख रही है, बट होपफुली आई गेस आई नो आई लाइक द लुक ऑफ इट। तो यस, अभी मैं मोटर ऑन करने आया था, ऐसा ना हो कि मैं फिर से पानी ना आए। तो मैंने आई गेस 5 मिनट हुए हैं अभी। आई कीप इट फॉर मोर लाइक 15 मिनट्स, उसके बाद बंद कर दूँगा आगे। ऑफिस में मैंने वही खाया था, चिकन सैलड अलॉन्ग विद सम कोल्ड ड्रिंक और बेवरेज, कोल्ड बेवरेज। इट वॉजंट दैट गुड, बट ठीक है, थोड़ा बहुत शुगर इंटेक हो गया तो कोई सीन नहीं है। अभी आके थोड़ा हम खाना खाएंगे, चेंज करूँगा, एंड देन विल मीट विद
the first meal or the second meal of the day. A few moments later. तो चेंज भी कर लिया, शावर भी ले लिया है, और अब मैं सेकंड मील खाने लगा था। फर्स्ट वाली तो वो चिकन सैलड था, अब मैं खाऊंगा दिस राइस एंड दाल। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी टेस्टी, और साथ में अगेन हाई कार्ब्स बिफोर द वर्कआउट इज़ ऑलवेज ए गुड आइडिया। तो ये खा के उसके बाद मैं आई गेस थोड़ा सा प्री वर्कआउट लूँगा एंड देन विल हिट टू द जिम, या फिर मैं सोच रहा हूँ छुट्टी ले लूँ आज, बट लेट्स सी, आई लेट यू गाइस नो। तब तक आई जस्ट एंजॉय माई फूड, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत मूवीज़ देखते हैं, ऐसा कुछ, जस्ट टू get my head out of my ass, whatever I've been thinking about. It's not that, whatever is going hard in your life, you're not going to think about it. You are always obviously going to think about it. It's just that, when you start working on your goals and actually taking those actions, things start to, get back into place, and, it will just keep your mind busy, because an empty mind is always the devil's mind. So I've heard that quote somewhere. पहले मुझे बाल सेट करना था, मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है इस टाइम पे। तो खाना वगैरह हो गया, अब मैं सोचा था कुछ थोड़ा ना कुछ पीने को ले लूँ, बट पीने को कुछ पड़ा नहीं था, एंड देन मेरी नज़र पड़ी पाइन पे, तो मैं पाइन खाने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे जिम को, या फिर पता नहीं, देखते हैं, शायद छुट्टी मार लूँगा, लेट्स सी। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया फिर से गाइस, और मैंने ब्लू फॉर्मल्स डाले हैं along with a light blue formal shirt, और उसके बाद हम जूते गाइस मैंने डाल लिए हैं, स्नीकर्स वगैरह डाले हैं, if you guys have remembered from the previous video। और मैं ऑलरेडी गाइस लेट हो चुका हूँ, शिवांकी तो ऑलरेडी आ चुका है, वो कह रहा है कि फटाफट घर पहुँचो, और इसके साथ मैं परफ्यूम लगाने लगा हूँ, ये वाला, if you guys can see this। अरे यार फोकस ही नहीं करता है, डिजायर का विलन वाला डिजायर। ठीक है, सी यू गाइस। देखो फोटो आ रही है मेरी, अरे देखो ना, शक्ल आ रही है। हाँ हाँ गाइस 5 बज गए हैं, और सुबह से अभी ब्रेक मिली है, और कुछ खाया नहीं था, बस एक पराठा खाया सुबह से, पनीर पराठा। अभी थोड़ा टाइम मिला था तो मैं खा रहा था हनी चिली पोटैटो, बड़ी देर से मन कर रहा था, तो मैंने कहा कर ही लेते हैं। ये है अपना ऑफिस के बाहर का, देख रहे हो कितनी लेबर इन्होंने बना रखी है। बेसिकली हम लेबर ही है गाइस, या गाइस वो देखो एक और लेबर आ गया। आजा भाई, चाह कर दे, चाह कर दे बस। चलो गाइस, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली 6 बजे। कल तो मैं जिम गया नहीं, ये मैं बताना भूल गया, क्योंकि घर में गया 9:30 बजे तक मैं सो चुका था, बिल्कुल डेड था, और फिर ना खाया गया कुछ, ना बनाना शेक किया, और बस ऐसे ही पड़ गया। 2000 years later. चलो गाइस, ऑफिस से बाहर जा रहे हैं, निकल गए गाइस डीपी के गेट से बाहर। आज तो करते बंदे आ रहे हैं। Finally guys, with that we have another day out of the way, and back to the goal. I'm about to, go ahead and change, maybe have a shower, and then we will head to the gym, and I also have to go to a friend's place. After that, I will have my meals. I'm not even sure what I'm gonna eat right now, so let's see. I'm gonna have to check. I guess I have rice and dal, and I also have eggs. I have banana shake that I can make. But who's freaking bothered to make banana shake? Also, my phone is about to die. I gotta charge this so that I can film the rest of the video. Alright guys, so I am just up here. So I've done taking a shower, and I've made myself banana shake that I wanted to show you guys. Pull you guys out of here in a second and show it to you guys, I guess. This is it. So it's like more than
One glass, I guess. Now, sorry. This has three bananas, medium sized or maybe really big sized, and we have 250 to 300 ml of milk along with 50 grams of oats, like rolled oats. So yeah, this would give me at least 800 700 to 800 calories, which would be good for now. And I will be hitting the gym in a bit, so let's stay tuned for that, because today I will be hitting my triceps, my biceps, and I guess that's it, or maybe shoulders as well, or maybe back. Only reason I'm doing that is because yesterday I was supposed to hit chest along with the triceps, but my phone battery ran out, so I couldn't film that specific video. And right now I'm listening to music, my jam, so that I'm in the right headspace to work out and give my best in the workout. And I will be exhausted so much today because I really want to work on those arms today. Maybe focus on triceps and biceps. After having this, we will head to the gym and I'll see you there. After consuming the pre-workout and the creatine, ready for the first working set, that would be for shoulder press. We started off with some 20 kgs, but this is the second set, so 22.5 works as well. Making sure that you have the full range of motion, the dumbbells come all the way just next to your ear so that you know that the muscle is entirely stretched, or you can also make it a little more deeper. And then of course we had to do some posing because there's no other motivation except for seeing your muscles grow. And then we move on to the next set, that is for 25 kgs. I wanted to ask the guy for just help, or maybe just help with lifting it, and then in the end if I required some help then they would also do that. We did not have anyone else, so I had to ask this guy. But yeah, make sure that you do like 3 sets of each and every exercise that I'm showing you guys here, because I cannot definitely show you like all 3 sets, because that would really make the video a little more longer. Not even little, it like make it a huge video. We also finished off with some shrugs, which is really good for your traps. And then the next exercise that we move on to is lateral raises, which is a really good movement for your lateral head of your shoulders. And as you guys can see that you have to make sure that you push the dumbbells outward with your wrists and pinky finger specifically, and make sure that you are lifting your shoulder first, and then you lift your elbows, and then you lift your wrists, because otherwise the form would be really fucked up. For example, if you're lifting through your shoulders and then your wrist and then your elbows, it would really fuck up the entire movement. Then the next exercise we move on to for our triceps is tricep pushdowns, which is a really good exercise for the entire tricep. And that is the reason I chose this exercise, because it really pumps up the entire tricep muscles instead of focusing on one specific head, or the lateral head, or the long head. And then the next exercise that we move on to is dumbbell curls, which again, as you guys know, self-explanatory, but make sure that you twist your wrists in the first set, because that would really focus more on your peak of the bicep, and it also elongates your muscles when you are all the way down. And then another tricep exercise that we did with 25 kg dumbbells is tricep extensions, but with the dumbbell, making sure that you have your elbows pointed all the way up if you want to train your longer head. If you want to train um, a little bit of lateral head as well, then make sure that you point your elbows a little outward and then lift the dumbbell, making sure that you're not using your head or the back of the muscle. And as you guys can see the pump, I guess it's really working.
And then we move on to the last exercise, I guess, which would be for your biceps again. This would be hammer curls. Make sure that you do full range of motion. And there's another thing that I would like to point out, guys. This would really, pump up the muscle to the extreme level. That is, keep your arms tightened the entire movement so that the muscle is tensed all the time, and muscle under tension is a little higher. And yeah, guys, that was the workout. Enjoy the posing. पहुंच गया। अब ये दरवाजा खोलने में टंकी करेंगे। व्यू देखोगे गाइस। ओके गाइस, मैं जिम से वापस भाई के घर आया। तो अगेन दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर, थोड़ी हाई लेवल की एजुकेशन होगी। तो दिस इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ अ रियल गन, ठीक है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस नेम, बट दिस इज द ब्रांडिंग, ठीक है। और लुक एट दिस, यू गाइस कैन सी हाउ मच कैलिबर या फिर कितने mm का वो है, गन है, ठीक है। 4.5 mm एंड 0.177 कैलिबर की इसमें गन बुलेट बॉल बेरिंग्स आती हैं, ठीक है। तो दिस रेड बटन दैट यू सी, अगर इसको आपने नीचे किया तो दिस विल बी सेफ्टी ऑन, और अगर इसको ऊपर कर दिया तो इट विल बी सेफ्टी ऑफ। दूसरी साइड भी सेम चीज़ है। इसकी जब मैगजीन निकालनी है उसके लिए ये बटन को प्रेस करना होता है विद योर थंब ऐसे, और इट विल जस्ट पॉप आउट। इसमें कितनी होती है मैं भूल गया। इसके अंदर बॉल बेरिंग जाते हैं, कोई 18 से 20 डाल दो आप। 18 से 20 mm के बेरिंग्स जाते हैं। 24 to 25 की कैपेसिटी है इसकी। यस, और इसके अंदर एक वो गैस टैंक भी जाता है विच क्रिएट्स प्रेशर स्पेसिफिकली फॉर दिस, क्योंकि रियल वाली गन में तो वो होते हैं बारूद होता है, तो वो सीधे प्रेशर अच्छा बना देता है, ठीक है। अब इसको डिसमेंटल करना, उसके बाद उसको रीअसेंबल करना भी मैंने सीख लिया भाई से। मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत करके, ठीक है। तो पहले हम मैगजीन निकाल लेते हैं, निकल गया, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको, अगर इसको हमने डिसअसेंबल करना है, पहले हम इसको पुश करेंगे पीछे को, और साथ के साथ साइमल्टेनियसली इसको जब पुश करके इस बटन को दबाना है, ये वाले को, अलॉन्ग विद इसको लेवर को भी डाउन करना है। थोड़ा ट्रिकी पार्ट, आप देखो पीछे कर दिया, इसका बटन दबाया और इससे लेवर नीचे कर दिया, जिससे कि ये स्मूथली बाहर आ जाएगी। हाँ, निकल गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्प्रिंग वाला पार्ट आ जाता है। स्प्रिंग वाला पार्ट को निकालने के लिए पहले हम इसको आगे पुश करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ग्रिप बनाना भी जरूरी है तो फेस से दूर करके करना। अब ये देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट है ना, इस चीज़ को हमने डालना है वापस इस पार्ट के अंदर, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। और साथ के साथ आपको स्प्रिंग प्रेस करके इसके अंदर भी डालना है, ये वाले होल के अंदर। उसके इसको इसके अंदर डाल दिया। डोंट लीव इट, शीशा टूटेगा आगे मेरा। नहीं छोड़ रहा भाई। ये देखो एक ही बार में गाइज सेट होगी बिल्कुल वो नॉच उसके अंदर, ठीक है। इसको असेंबल करने के लिए फर्स्ट चीज़ द ब्रांडिंग को पहले अपने फेस की तरफ करो। भाई ने अभी मेरे को सिखाया था तो मुझे याद है गाइज, आई रिटेन द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद स्टार्ट, ये वाले नॉच को इस नॉच से अंदर डाल देना है, जस्ट सो इन ग्रूव्स के अंदर डाल देना है, यस। उसके बाद हमने इसको पीछे पुश कर देना है। अब पीछे पुश करने के लिए भी सेम ट्रिक है, यू हैव टू प्रेस पुश बैक, होल्ड दिस बटन एंड देन जस्ट बटन अगेन लीव करना है, जस्ट लीवर को ऊपर करना है, विच मीन्स दिस वे एंड दिस, एंड देन वी लेट गो, डन, ऑल डन। उसके बाद हम इसको डाल देंगे इसके अंदर एंड वी आर ऑल सेट। बहुत ज़्यादा वर्थ इट हो गया, आपको इतनी बड़ी प्रीमियम एजुकेशन दी थी। गेस करो ये कितने की ली होगी भाई ने, कमेंट सेक्शन में बताना, फिर नहीं तो फिर मैं ही पिन कर दूंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जाएगा बताने में। ऑलराइट गाइस, so it is 1:35ish and I came back. I'm having my last, leftover banana shake. It was this much, which is pretty good, and it feels really good. It was in the fridge, so I'm just loving it. So I wanted to touch down on one specific topic that I've been doing a lot lately in these latest videos, but I'm actually enjoying them because it helps me bring value to you guys. So today's topic was basically, I was thinking about, not every battle that you have on your daily basis is worth putting your energy towards. So let me tell you what I mean by that.
For example, if just starting off your day and someone disrespects you, or maybe ignores your message, or something he does that you do not like specifically towards you, or if you feel that way, this entire situation does is it's going to run around all over your head the entire day, and it's going to fuck up your day, and your emotions are going to be all over the place. In some cases that happens to me as well. That is the reason I wanted to talk about this. The best way to get around this is, for example, first you have to ask a question to yourself. Does that thing that the other person did really matter to you? Like, how is it actually affecting you? The second question that you have to ask, is the other person capable enough, or maybe will be able to understand how this situation affected you and why you don't like it? Just let them know. If you think so, if the other person will be able to understand, only then go ahead and have a word with them and let them know everything, like why the situation bothered you and how it's affecting you, and how you feel disrespected. If you think that the other person is not able to understand that, then do not waste your time with them. Just change your approach towards them, and totally depends on how much access you're giving to the other person to control your mood or your emotions. So that was today's thing, guys, and I was just really thinking about it because it had happened with me these past 2 weeks, and I wanted to open up about it, and finally I have, and I feel like this would do justice towards why I have been away, and I'm trying to provide value to you guys, of course. With that, guys, let's close this video up. If you like the video, make sure to give it a thumbs up, subscribe to the YouTube channel, hit the bell icon to get notified every time I post a new video, because you don't want to miss them, guys.